Welcome back, class. In previous lecture, we have talked about the problems documenting using natural language, and we discussed the phenomena called transformational effect that lead to misinterpretation of requirements correctly. Therefore, as a software engineer, we will implement 5 transformational processes to make statement clear and more understandable. Let's talk about normalization first. Okay, normalization is basically long lasting. एक हमारे पास प्रोसेस है, इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगुलर इवेंट. हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस जो होता है, एक प्रोसेस जिस तरह मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग की बात कर लें हम लोग, या हम प्रोसेस की बात कैलकुलेशंस की बात कर लें, तो ये प्रोसेस है. कैलकुलेशन किस चीज़ कैलकुलेशन या प्रिंटिंग किस तरह की जाती है, ये एक प्रोसेस है. तो इसको हम लोग सिंगुलर इवेंट में डालेंगे. हम लोग इसको एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. ऑल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस इज देयरबाय लॉस्ट. तो इस काम के अंदर हमारे पास प्रोसेस को समझाने का मकसद नहीं होता, या हम इसमें प्रोसेस को नहीं समझा पाते. बेसिकली हम सिर्फ एक प्रोसेस बोल जाते हैं सेंटेंस के अंदर. लेट्स सपोज कि जी सिस्टम जो है वो प्रिंटिंग करेगा. अब प्रिंटिंग जो है वो एक बाकायदा प्रोसेस है, लेकिन उसको हमने डिफाइन नहीं किया. हमने सेंटेंस में इवेंट के अंदर डिफाइन कर दिया उसको. ठीक है. द प्रोसेस वर्ड ट्रांसमिट टर्न्स इनटू द नाउन ट्रांसमिशन. Other typical examples of normalization are the terms input, booking, acceptance. तो देखें जी, हमारे पास we got an example here. The example says in case of a system crash, in case of a system crash, the system shall a restart or system shall be performed. There are two processes here. The term system crash and restart each describe a process that ought to be analyzed more precisely. तो probably some of you might don't even know कि जी के ये restart क्या होता है और system crash क्या होता है. तो we need to explain those things. ठीक है. Now let's move on. Excuse me. Defining the process completely. Okay, for describing a process against a normalized term is not a must. So if you are writing a sentence in which there are some processes are there, कैलकुलेशन, प्रिंटिंग, एनीथिंग, तो लाजमी नहीं आप उसको एक्सप्लेन करें कि प्रिंटिंग क्या होती है और वो क्या चीज़ होती है. हाउएवर इफ डिफाइंड, अगर आप उसको डिफाइन करते भी हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसेस शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर. तो आपने उसको बहुत प्रिसाइसली और क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोसेस जो इस सेंटेंस में आया है वो है क्या. सो दे कैन बी यूज इफ द प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफाइंड, ताकि समझी जा सके और उसको प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा तो समझ आएगी बेहतर. ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस वन शुड एग्जामिन दैट द सफिशिएंट डिटेल ऑफ द प्रोसेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. तो आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो प्रोसेस हैं इनको डॉक्यूमेंट करें, इनको लिखें, टू इंश्योर दैट द स्टेक होल्डर अंडरस्टैंड्स इट वेल, ताकि वो पता चले जी के आपका जो स्टेक होल्डर है वो गलत ना समझ ले प्रोसेस को. तो इनको फिर किस तरह डिफाइन करेंगे, इन प्रोसेस को हम इनको ग्लॉसरी में उठा के डाल देते हैं. ओके. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट नाउन विदाउट रेफरेंस इंडेक्स. नाउन्स विद मिसिंग रेफरेंसेस. अब क्या होता है, समटाइम्स देयर आर सेंटेंसेस, या समटाइम्स यू आर गैदरिंग अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर आप लोगों को चीज़ों को बता रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा तो ये ऐसा कर लेना, तो ये वो होता है तो वो ऐसे होता है. तो नाउ द थिंग इज, इसमें रेफरेंस मना है कि वो क्या है और ये क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. लाइक इन प्रीवियस सेक्शन ऑफ प्रोसेस वर्ब्स, नाउन्स आर समटाइम्स इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड. तो जो नाउन आपने एक्सप्लेन जो डाले गए हैं इसके ना, हम, वो, ये, फलां, इनका जिक्र नहीं आया. दिस इज कॉल्ड इनएडुकेट इंडेक्स ऑफ रेफरेंसेस, like user controller, system, the message, data. Such statements raise questions. तो इनको फिर हम किस तरह ठीक करेंगे. Let's check out this example. The data shall be displayed to the user on the terminal. To the user, now which user? On the terminal. तो terminal तो देखा जा सकता है, maybe it's a user terminal.
डाटा की बात करेंगे, so correction of such statements can be done in similar manner. Let's see, the system shall display the billing data. So the data has been corrected, it's a billing data, to the registered user on the terminal she is logged into. So we have corrected it because they are the nouns, they are not specified. So we define the nouns here. Now let's move on to the next one, and the next one is called universal quantifiers. We already know how to quantify things, like वहाँ पे 6 बच्चे थे तो the 6 is quantifiers. ठीक है, दिस इज हाउ वी क्वांटिफाई. तो क्वांटिफाइंग का मतलब होता है जी कि आप किसी चीज़ को नंबर दे दें. स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज. The group is set of objects and make a statement about the behavior of this set. When using universal quantifiers, there is a risk that the specified behavior or property does not apply. So grouping is done. तो usually what we do is like, जब आप कोई चीज़ when we are developing something, तो हम उनको उनकी behavior के बेस के ऊपर हम उनको ग्रुप्स में डाल देते हैं. तो वहाँ पे एक रिस्क बन आता है हमारे पास. रिस्क क्या है? ऑफ स्पेसिफाइंग बिहेवियर प्रॉपर्टी दैट डू नॉट अप्लाई टू सेट. तो ऐसा हो सकता है जी कि मैं कहता हूँ जी कि डाटा को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे कर दें. तो अब इफ़ दे आर नेम्स इन दैट डाटा सेट, तो नेम्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट किस तरह कर सकेंगे? दिस इज़ अ प्रॉब्लम. तो इस तरह की चीज़ें स्टेक होल्डर्स मिस्टेक्स करते हैं जब वो नरेट कर रहे होते हैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल identifying universal quantifiers. Therefore, when a stakeholder defines specification, जब भी वो explain करेगा आपको, we as a software engineer has to verify that such behavior apply to an object of set or the whole set. तो वो किसी एक सेट पे काम करेगा या एज अ होल सेट जो उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स हैं उन सब के ऊपर वो अप्लाई किया जा सकता है. यू नीड टू मेक श्योर. किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उनको? बाय यूजिंग ट्रिगर वर्ड्स लाइक नेवर, ऑलवेज, नो, नन, एवरी, ऑल. तो ये जो ऑल है, लाइक ऑल सेट्स को हम कर देंगे, या एवरी जो डाटा आएगा हमारे पास उस पर हम ये करेंगे. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी कि वो वाकई इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता. लेट्स सी द एग्जांपल. द सिस्टम शैल शो ऑल डाटा सेट्स इन एवरी सब मेन्यू. तो अब ऑल डाटा सेट्स की बात करते हैं तो मे बी डाटा सेट्स आपके पास कोई 10 बन चुके हों. सो वे यू प्रॉब्ली नीड टू आस्क रियली ऑल डाटा सेट्स. तो इसको करेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे फिर आप लोगों को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड कंडीशंस. Identify and clearly clarify condition structures. Now conditions लगती हैं कि if this thing happens then इस तरह किया जाए. तो ये कंडीशंस हैं. इन कंडीशंस को भी आप लोगों को यू नीड टू राइट व्हेन यू आर राइटिंग रिक्वायरमेंट्स और eliciting the requirements. तो conditions if not specified properly lead to a loss of information of requirement specifications. So we need to understand the conditions. What conditions are there at the background? Conditions specify the behavior aspect of requirements and functions. तो behavior बताती हैं requirements का और functions का जो अपने चल रहे हैं. When the conditions are not met and are met and not met. all right. तो conditions जब met होंगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा. These conditions are important in complex structures. अगर complex structure आ रहा है तो उसमें आप लोगों को इसमें problems आ सकती हैं conditions अगर ना डाली जाएं. तो let's suppose if I have a set, एक हमारे पास एक रूटीन है, एक फंक्शन है जिसके अंदर आप लोग एक बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे होगा तो ये करेगा, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये करेगा. और उसके अंदर सब डिवीजन हो सकती हैं जी कि अगर इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास नंबर्स आएंगे तो ये होगा, अगर हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो ये होगा. तो लेटर ऑन जब ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपने कंडीशंस डिफाइन नहीं की होंगी तो प्रॉब्लम आ सकती हैं. ट्रिगर वर्ड्स आर इफ देन इन केस डिपेंडिंग ऑन एंड एटसेट्रा लाइक दिस. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वाइल राइटिंग दी रिक्वायरमेंट्स तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस क्या हैं ताकि आप उनको वहाँ पे लिख सकें रादर देन आप उनको छोड़ दें. तो छोड़ना नहीं है. वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज कंडीशंस देयर ताकि काम आगे बेहतर हो सके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट स्पेसिफाइड कंडीशंस. Let's see, हमारे पास पहली कंडीशन आ रही है. द रेस्टोरेंट सिस्टम शैल ऑफर ऑल बेवरेजेस.
तो एक सिस्टम है, कह रहा है जी कि रिक्वायरमेंट्स बोली जा रही हैं टू रजिस्टर्ड गेस्ट ओवर द एज ऑफ 20 years। तो कह रहे हैं जी कि रजिस्टर्ड गेस्ट जो हैं एज ओवर 20 होंगे उनको आप बेवरेजेस दिए जाएंगे। ओके, व्हाट इज अनस्पेसिफाइड इज which beverage to guests younger than 20 years? Therefore, we need to clarify and extend the requirements as following. तो हमने क्या करना पड़ेगा? We need to extend. See, the word here is extend. We need to extend the requirements. The restaurant system shall offer all alcohol-free beverages to any registered user younger than 21 years. All beverages included all alcoholic beverages to any user over the age of 20. तो we need to define the condition. हमने condition define की और हमने उसको बेहतर कर दिया. Okay. Now let's move on to the next one, and the next one is incompletely specified process verbs. ना होता क्या है कि जो process है उसके जो verbs हैं, जो actionable चीज़ दिखाई जा रही है, बताई जाती है सेंटेंस के अंदर, वो इनकम्प्लीट होती हैं, तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ जाता है. Completing process words. Let's complete them. Some process verbs require more than one noun to completely understand it. तो हमें कभी कभार चीज़ों के साथ दो डिफरेंट किस्म के process verb लगाने पड़ जाते हैं ताकि हम उसको बेहतर समझ सकें एक process को. ठीक है. Condition. Consider a verb transmit. To define it, we must consider three supplements to complete it. अब देखें जी, एक ट्रांसमिट करने की बात करिए, डाटा जो होगा वो ट्रांसमिट किया जाएगा, लेट्स सपोज टू किसको, व्हाट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, कौन सा डाटा, फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, टू वेयर इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड. मतलब यूज़र कौन होगा जिसको आप ट्रांसमिट करेंगे, कहाँ से करेंगे, डाटाबेस से उठाए करेंगे या कहीं से गैदर करके उसको फिर आगे ट्रांसमिट किया जाएगा. तो दीज आर थ्री क्वेश्चंस. अगर हम देखें तो प्रोसेस वर्ब हमारे पास ट्रांसमिट है, उसके साथ ये तीन चीज़ें, इसको हम लोग सप्लीमेंट्स बोलते हैं. तो ये तीन सप्लीमेंट्स के साथ लगाए जाएंगे. इस तरह के हमारे पास टूल्स भी आते हैं जो कि इन सप्लीमेंट्स को डिफाइन करते हैं. ये एक आई थिंक दिस इज़ जर्मन एक टूल है. इस डॉक्टर साहब का बनाया हुआ टूल है और इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि अगर आपने प्रोसेस वर्ब डिफाइन करना है तो जी उसमें किस तरह के प्रोसेस वर्ब्स लगाए जा सकते हैं. मैंने इसको देखा नहीं है. इफ़ यू वांट टू ट्राई इट, प्लीज़ डू. अगर टूल नहीं है आपके पास, देन व्हाट टू डू. इन एडिशन, adjectives and adverbs may need to be supplemented as well. So some adjectives and adverbs may be implemented. Such supplements of adjectives and adverbs are less frequent with verbs. So how to fix them? तो the thing is कि जी के कभी कभार आप लोग इन process verbs से adjectives या adverbs भी नहीं लगा सकते इतने अच्छे. तो क्या किया जाए फिर? Let's talk about fixing the process verbs. तो हम इसको फिक्स करेंगे, process verbs को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. अभी भी इतने अच्छे नहीं हुए प्रोसेस वर्ब्स हमारे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वी कैन फिक्स देम या हम इसको किस बेहतर कर सकते हैं. तो हम इसको ठीक करेंगे. व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल अवॉइड पैसिव वॉइस. To avoid process verbs, do not choose passive voice statements. For example, 5.7 explains requirements using passive voice. To log a user in, the login data is entered. Not good. Question is who enters the login data, where and how it is being done. So what we need to do is we need to use active voice instead. Active voice includes a person and requirements. So when we write the same requirements using active voice, we can state the system must allow the user to enter his username and password using the keyboard of the terminal. So we fix the process verbs by using active voice instead of passive voice. So thank you very much for watching part 1. Next week we will discuss the templates and its types for writing requirements. Thank you very much. Take care.